बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये MDCAT स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का जो टेस्ट इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें MCQs इम्पोर्टेंट MCQs जो रिलेट करते हैं टेस्ट नंबर 6 वेव्स एंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपने प्रेस करना है। तो वी आर द क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर, द वेव्स विच प्रोपोगेट थ्रू द ऑसिलेशंस ऑफ द मटेरियल्स पार्टिकल्स आर नोन एज स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव्स। आपको पता है मैकेनिकल वेव्स जो हैं स्टूडेंट्स दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। So right answer is option A, mechanical waves. Number 2 is the waves which propagate out in space due to oscillations of electric and magnetic fields, and we all know that's about the electromagnetic waves. यानी जिसमें electric field भी होता है, magnetic fields भी होता है, they are perpendicular to each other and move in the direction, यानी ये orthogonal है, यानी direction electric field और magnetic field they are perpendicular to each other. And third one is, which of the following is there examples of mechanical waves? A wave generated in rope, coil of spring, water waves, all of them, that is the right answer. ये स्टूडेंट्स सारे mechanical waves हैं, यानी they require a medium for their propagation. And number 4 is, when a wave travels from one place to another, it transfers energy, and you can say energy is there, and the right answer is energy. And number 5, which of the following is not the mechanical waves? इनमें से कोई एक मैकेनिकल वेव नहीं है। तो स्टूडेंट्स, लाइट वेव्स दे आर इज नॉट अ मैकेनिकल वेव because light waves are electromagnetic waves and they don't require medium for their propagation. So light wave is the right answer. Longitudinal waves are also called, students, longitudinal waves का other name क्या है? Students, compressional waves, transverse wave, radio waves, none of these. The right answer is compressional waves. And number 7, the distance covered by wave during one period. अब यहाँ पे स्टूडेंट डिस्टेंस की बात हो रही है। The distance covered by the wave in one period, then time 1 second, so that is the wave speed. Wave speed, V is equal to S over T, distance over time, so that is wave speed is the right answer. And then we have the next one, the distance covered by the wave in 1 second, so it is also wave speed. A traveling wave has a shape of sine wave. Sine wave, then जिसमें crust or troughs, sine wave, like that, so it's a sine wave. So that's the sine wave. And number next is, we have in the same medium, velocity of the wave remains same, remains constant. So constant रहती है, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, constant रहेगी क्योंकि मीडियम सेम है. The square root of 1.4 is greater than 0.4, greater than 0.4. A string is stretched between 2 points and plugged at right angles to its length. The vibration produced. A string is stretched between 2 points and plugged at right angle to its length. So once waves produced, that will be stationary waves. Longitudinal transverse wave, no vibrations at all, none of these. So these are stationary waves. Stationary waves में नहीं है, तो none of these is right. Number 13, wavelength and time period are related in the velocity v of the wave is, so that is the wavelength and time period. Wavelength and time period t are related to the velocity. V is equal to, students, we know this relation, V is equal to f lambda. V is equal to f की जगह पे 1/t आएगा, so that is V is equal to lambda over t.
सो लैम्डा ओवर टी इज़ द राइट आंसर। तो लैम्डा ओवर टी इसमें नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि नन ऑफ दीज आएगा, तो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। नंबर 14, इन कंप्रेशन वेव द लेयर ऑफ द मीडियम हैविंग reduced pressure is called refraction। इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स मिनिमम, इसलिए इसे हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। और कंप्रेशन में क्या होता है, वेयर द क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम। ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी सेट अप इन, यू कैन से सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, ऑल ऑफ देम। फ्लूइड्स कैन ट्रांसमिट, I mean transverse wave, compression waves, both of them. So both of them is the right answer. Number 17, solids. Only following type of wave can travel both A and B. Both A and B. I mean transverse and longitudinal waves. Solids में दोनों waves होते हैं, transverse wave भी और longitudinal। आपको याद होगा स्प्रिंग में अगर आप विगलिंग करते हैं, अप एंड डाउन मूव करवाते हैं तो ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल में बैक एंड फोर्थ आप मूव करवाएं तो बैक एंड, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो, तो बोथ ए एंड बी, सो दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस। एंड वी हैव द नेक्स्ट वन इज वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम कैन ट्रांसमिट both transverse and longitudinal waves? Solids, I have just told you, solids. Which of the following elasticities is possessed by fluids? Fluids में स्टूडेंट्स बुल्क मॉडुलस आप जानते हो कि इसमें स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सो वॉल्यूम चेंज, तो फ्लूइड्स के लिए बुल्क मॉडुलस इज द राइट ऑप्शन। द स्पीड ऑफ द वेव्स इन द स्ट्रिंग्स in terms of tension F and mass per unit length of the string is given by V is equal to F over M. So T over M या F over M. So that is the right answer. And 21, in the formula of finding the speed of the waves in the string, unit meter in SI unit is kilogram per meter. So this one is the right answer, kilogram per meter. And 22, when the particles of the medium vibrate direction of the motion of the waves are called longitudinal waves. And longitudinal waves में particles की direction और propagation of the wave they have in the same direction. The angle is 0, so that is the longitudinal waves. SI unit of the wavelength is meter, so meter is the right option. 24, the portion of the wave above its mean level, that is called crest. इसे हम crest कहते हैं, यानी ऐसा पोर्शन, ऐसा पार्ट वेव का अबाउट इट्स मीन लेवल हो, इसे हम क्रस्ट कहेंगे। इन ट्रांसवर्स वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अभी मैंने बोला था कि इस पर्टिकुलर केस में आपने याद रखना है ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी पार्टिकल्स की डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। क्रस्ट एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड इन ट्रांसवर्स वेव्स, यानी ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में स्टूडेंट्स कंप्रेशन रेरफैक्शन होते हैं, और स्टेशनरी वेव्स में नोड्स एंड एंटी नोड्स होते हैं। 27, ऑफ द फॉलोइंग द ऑप्शन रिमाइंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स जो हैं, that is the best example of the longitudinal wave, the sound waves. Which one of the following waves motion transverse? Wave motion produces in water when a piece of stone is thrown into it, so that's the name, and it is part A. If one end of the rubber cord is fixed with a support and the other end is wiggling by hand, the wave generated on the cord are both of them, I mean stationary waves and transverse wave. Both of these options they are correct. 30th, the wave motion is possible in all of them. Wave motion students इन सारों के लिए possible. Elasticity, inertia, density, ये सारे. So all is the correct. Transverse wave motion is possible in, right answer is string. String is that is the transverse wave.
If lambda is equal to 1 centimeter and the time period is 0.02 second, then the velocity is there. Velocity की वैल्यू स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी. v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी लैम्डा ओवर टी. अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट लगा दें, 1 सेंटीमीटर है तो 0.01 मीटर आएगा और डिवाइडेड बाय 0.02, so that is time here. 0.02 they cancel out and the right answer is 0.5 मीटर पर सेकेंड. और सेंटीमीटर में अगर आप देखें so 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड. So this option is the right option. 33. For transmission of both the transverse and longitudinal waves, we can use solids. वह solids में transverse wave और longitudinal wave दोनों होते हैं. 34. The distance between two consecutive refraction is called wavelength. तो refraction और compression refraction ये distance किसके बराबर? wavelength लैम्डा के बराबर. जिस तरह क्रस्ट और ट्रफ लैम्डा के बराबर है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन भी लैम्डा के इक्वल वेवलेंथ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव मोशन इज लॉन्गिट्यूडनल? तो वन ऑफ a string is fixed and the other end is wiggling. A piece of stone is thrown, still water, so that is the right option. 36. Sound waves cannot propagate through walls, grass, wood and vacuum. Vacuum is the right option. तो वैक्यूम में एयर नहीं होती, मीडियम नहीं होता, स्पीड ऑफ साउंड इज 0. सो साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. द डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन द टाइम 0.1 सेकेंड. इन टाइम 0.1 सेकेंड. 0.1 सेकेंड में कितना टाइम होगा? स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड डिस्टेंस कवर्ड यहाँ से पूछा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.1 सेकेंड. So 332 into insert the values and we get the answer. So this one is the right option. An experimental value of the speed of sound in air at 0 degree centigrade 332 meter per second. आप लोगों ने याद रखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड कितना? 332 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर. सो दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर. यानी v इज इक्वल टू speed of sound is directly proportional to the square root of the temperature. So that is the right option. Square root of the temperature. And the next one is, so this one is the right option. Square root of the temperature. So this one C is the right one. What is the ultrasonic waves having frequency? Ultrasonic students above 20,000 hertz. यानी अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज की वेव्स होती हैं. अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज इज़ इन ऑडिबल साउंड. यानी ये हम सुन नहीं सकते. 5 हर्ट्ज इन ऑडिबल साउंड. द स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटेस्ट इन किस में होती है स्टूडेंट? सॉलिड में, स्टील में ज़्यादा होती है. एंड द नेक्स्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज. 20 हर्ट्ज से लेस देन फ्रीक्वेंसी हो इंफ्रासोनिक्स. इंफ्रासोनिक्स इज द राइट आंसर. एंड स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर. यानी ये प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड पे. डेंसिटी का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, लेकिन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ. इन स्पेस साउंड वेव्स cannot travel because there is no medium. I mean vacuum is there, so that is right, because there is vacuum. Vacuum is the right option. And 46 students, sound waves having frequencies between 20 hertz, 2 kilohertz and 4 kilohertz, you can say they are infrasonics. आप जानते हो कि वो less than 20 hertz, ultrasonic 20,000 से ज़्यादा होती हैं. So none of these is the right option. And we have the next one is the ratio of the speed of sound in hydrogen to the speed of sound in oxygen. So that is 4:1. इसकी रीज़न ये है कि speed of sound V is inversely proportional to the density, square root of the density, and the density of oxygen is 16 times greater than hydrogen,
and if we take the square root of 16 you get 4. So speed of sound in hydrogen as compared to the oxygen, that is 4:1. Laplace assumed that sound travels in gases under adiabatic conditions. The value of gamma for air is 1.4. 1.4 is the right. 1 degree Celsius dash in temperature produces approximately 0.61 meter per second dash in the speed of sound. So you can say 1 degree Celsius rise in temperature, approximately 0.61 टाइम इंक्रीज. तो यहाँ पे राइज एंड इंक्रीज आना है, तो से इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है. देखिए फॉल डिक्रीज है, राइज डिक्रीज है, फॉल इंक्रीज है, तो इसमें आना है 1 degree Celsius rise in temperature increase, rise and increase. So none of these is the right option. So thank you for watching.